इस फिल्म के लिए काफ़ी ऐसी कोई तैयारी मैंने की नहीं है, बट येस आई एम वेरी हेल्थ कॉन्शियस और आई एम वेरी डिसिप्लिन. सो तो हाँ, मैं वर्कआउट, आई एम अ वर्कआउट फ्रीक. आई लाइक टू गो टू द जिम, आई लाइक टू कीप इट दिस थिंग ऑन माई डाइट, वर्कआउट, वो सब ऑफ कोर्स ध्यान दिया. 6 महीने पिक्चर शुरू होने से पहले, 3-4 महीने पिक्चर शुरू होने से पहले मैंने ज़रूर ध्यान दिया. And so I'm happy with the way I'm looking. Well, I honestly think first of all, the script is what attracts me to films, and secondly, what I can do with it. I think that's what makes it interesting for me. Otherwise, it's not interesting. I mean, अगर ऐसा ही कोई रोल है जो मैंने मतलब पिछली 10 बार किया हो या 15 बार किया हो या 20 बार किया हो, that I can do with my eyes closed, with my hands tied behind my back, it doesn't make any sense for me to do the film then anymore. I think if I do a film, I want to do a film because I want to make something different out of it. जैसे अगर हर बार रोज़ दाल चावल बनाओगे तो कभी ना कभी लगता होगा कि आज चिकन बना देती हूँ या आज मटन बना देती हूँ. तो ऐसा ही कुछ मेरा हाल है. Well, we have tried to make it as like Shahrukh says. Honestly, he's the producer, so he always strives as a producer कि उसके बैनर पे जितनी भी पिक्चरें बनती हैं वो पिछले पिक्चर से बेहतर हो. और इस बार आई थिंक PVR ने बहुत अच्छे स्क्रीन्स भी बनाए हुए हैं उसके लिए. तो व्हेन यू गो एंड वॉच इट, होपफुली यू विल एंजॉय इट इवन मोर. एंड आई थिंक ऑनेस्टली दैट द फिल्म, whenever we make films or whenever I do a film, I would like to make a film to entertain people. और लोगों को पसंद आना चाहिए, मुझे पसंद आना चाहिए. मुझे ऐसी पिक्चरों में काम करना है जो चाहिए जो मुझे पसंद आए, जो मुझे देखने की ख्वाहिश हो उससे. तो I think that's important. Is the film ready? Have you seen it? I haven't seen it. Okay. I haven't seen it. I have seen portions of it. डबिंग करते वक्त मैंने 2-4 मैंने आधा घंटा ऐसे ही चुपके से देख लिया, चोरी करके. लेकिन I haven't seen the whole film per se as a whole put together. But so far so good. Cross my fingers. शाहरुख में एज अ एक्टर, एज अ दोस्त कितना बदलाव आया है? As a human being, I would say he's really evolved. He's grown as a person. I think his attitude towards life is wonderful to see right now. I think he's got this lovely, nice. He's in a nice place, personally speaking. And as an actor, of course, I think he's amazing as an actor. I've always said that whenever I work with him, it's a learning experience for me whenever I work with him. So I've learned so much from him, and I think that every time, जैसे इस फिल्म में भी मुझे लगता है कि मैं कुछ ना कुछ ज़रूर सीख के आई हूँ. शायद मुझे समझ में नहीं आता है कि वो क्या है exactly, but I know कि अगली पिक्चर करूँगी तो कहीं ना कहीं उसकी कोई सीख मेरे दिमाग में ज़रूर रहेगी. अपने आप में बहुत ग्रोथ महसूस कर रही हूँ. मतलब मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मुझे लगता है ये बिल्डिंग से ज़्यादा बड़ी हो गई हूँ. अपने आप में आई थिंक आई हैव ग्रोन. ऑफ कोर्स आई हैव ग्रोन. इफ आई हैड नॉट ग्रोन, आई वुड not be sitting here in front of you so comfortably, so calmly. I think I've grown as an actor. I have had to change as an actor. What was okay for me to do 20 years back is not okay for me to do today, and I realize that, and I definitely want to figure that out. Again, it's always going to be a fight between what is expected and what I expect out of myself. So there is always going to be that fight on in my head and around me, and hopefully that will always challenge me to grow more and more every day. I definitely want to work more, maybe not at the pace that anybody else does. I definitely want to do one film in 2 years, one film, around about that time. That time I think is perfect. I don't want to do more than that. I definitely don't plan to do more than that, no. For more news and gossips, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.